Yes students, after unit 1 we have to start with chapter 8, that is unit 3, cell, the unit of life. Each and every living being, or we can say life, start from cell only, and cell is the basic structural and functional unit of life. You must have studied about cell in class 7, class 8 and especially in class 9. So I hope you know about the basic of cell, like what is cell membrane, where is cell membrane, what is nucleus, what is cytoplasm, cell organelles, mitochondria, chloroplast. That each and every organelle or each and every part of cell we have to discuss in detail. But the very important part of this chapter is history. So we have to do the history very first from entire chapter, or we can say complete chapter. If something is left, then we can cover in the later phase of this chapter. I try to find every, we can say, discovery that given in NCERT. फिर भी कोई रहती है तो we will discuss later. So we know that in 1665 Robert Hooke discovered cell in a, we can say, cork of dead plant में उसने discover की थी with the help of simple microscope. Okay, and in 1674 Anton von Leeuwenhoek discovered first living cell. उन्होंने एक पॉन्ड से फ्री लिविंग एल्गी डिस्कवर की थी. स्पाइरो वगैरह की जो सेल्स हैं उनको उन्होंने देखा था. एंड ही ऑल्सो डिस्कवर्ड मैनी अदर सेल्स जो लिविंग सेल्स थी और फ्री सेल्स थी. तो इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल. In 1674 Leeuwenhoek discovered living cell. After that in 1831 there are many we can say different other discoveries and phases in between these discoveries, but we have to follow only that given in NCERT. Okay, so after 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को. देन in 1838 मैथियस स्केलेटन था एक बॉटनिस्ट. he observed the different plants and plant parts, and he observed that कि all plants are composed of cells and their tissues are composed of cells. तो उन्होंने ये कहा था, स्केलेटन ने स्टडी किस पे की थी, प्लांट्स पे, एंड स्टेट दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. 1839 थियोडर स्क्वान, ये जोलॉजिस्ट था जो एनिमल्स पे काम करता था. तो ही स्टडीड दैट ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ cells. Okay, that means each and every organism or animal or plant is made up of cell or is a product. So they have given a theory known as cell theory. They have stated that ki all living organisms are made up of cells or is a product. Okay, but they didn't explain ki how the new cell arise from. That means what is the origin of new cell or what is the source of the previous or old cell. तो स्क्वान ने और क्या किया था, he also reported that cell has a thin layer or boundary. Now we call it cell membrane or plasma membrane. And he also observed cell wall is a unique character in plant. तो इसने तीन ऑब्जर्वेशन की थी. एक तो कि थिन लेयर होती है, एक सेल वॉल ऑब्जर्व की थी कि दैट यूनिक कैरेक्टर है, एंड ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. तो स्केलेटन एंड स्क्वान ने सेल थ्योरी दी थी, एंड दे टोल्ड दैट ऑल द living beings or the organisms are made up of cells or is a product. Okay, then after that एक और साइंटिस्ट था 1855. इसकी क्या टॉपिक थे, they didn't explain कि what is the origin of new cell or what is the source of the cells. वो सेल कहाँ से आती है, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था. then in 1855 रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट था. he stated a term that is omnis cellula e cellula. omnis cellula e cellula इसका मतलब होता है all new cells arise from pre-existing cells. That means all new cells arise from pre-existing cell. और उसने क्या किया, इस जो थ्योरी थी सेल थ्योरी स्क्वान एंड स्केलेटन की, उसको मॉडिफाई किया, एंड ही गेव द मॉडर्न सेल थ्योरी. जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी इसको मॉडिफाई किया, और 2 पॉइंट बन के फिर सेल थ्योरी में. Very first, that all living organisms are made up of cells or is product. और second point यहाँ से आया कि all new cell arise from pre-existing cells. तो 1838, 39 and 1855 रुडोल्फ विर्चो इसने मॉडिफाई किया था. Then in 1898 कैमिलो गोल्जी था,
एक साइंटिस्ट, उसने फर्स्ट ऑब्जर्व गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज पैकिंग में काम करती है प्रोटीन का लिपिड के। देन इन 1950s, दैट मीन इस इन वी कैन से दिस फेज 1950 टू 1960, इसमें क्या था कि एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो आया। लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप। नाउ वी आर हैविंग ए लेटेस्ट वी कैन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय विच वी कैन ऑब्जर्व ए वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर ओके ऑफ सेल। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 के बाद जो आया, तो उससे दैट मीन्स वी हैव डिस्कवर्ड मैनी अदर थिंग्स इन सेल और मैनी अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए सेल। उसके बाद इन 1953 जॉर्ज पैलेडे था, उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था राइबोसोम्स को अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दीज राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज पैलेडे पार्टिकल्स, वो हम बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन, टू साइंटिस्ट थे, दे हैव गिवन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा membrane. They have told that कि how cell membrane is we can say arranged or what are the different components of cell membrane. तो उन्होंने दिया 1952 में सिंगर एंड निकोलसन ने, that name of model is known as fluid mosaic model. This is the very important model and discovery. Okay, so just take a brief revision. 1665 Robert Hooke discovered cell. 1674 Leon Hooke discovered living cell. 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस। 1838-39 में स्केलेटन ने सेल थ्योरी दी थी। स्केलेटन ने कहा था ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, स्क्वान ने क्या कहा था कि ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। देन 1855 रुडोल्फ विर्चो ओमनीसेल्ला, दैट मींस ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बात इन्होंने नहीं बताई थी। 1898 में कैमिलो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व गोल्जी बॉडीज। 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, फिर और चीजें डिस्कवर हुई। देन 1953 जॉर्ज पैलेडे फर्स्ट ऑब्जर्व राइबोसोम आल्सो नोन एज पैलेडे पार्टिकल्स। देन 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने दे हैव गिवन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चैप्टर 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, now cell. So what is cell? Cell is known as structural and functional unit of life. So what do you mean by this structural and what do you mean by this functional? Keep 3 examples in your mind. One example is of amoeba, one example is of any virus, one example is of any plant, or we can say of any animal. We can say, we know that all these living things are made up of cells, but this is unicellular, this is we can say made up of plant cells, और ये बना हुआ है animal cells, and they are we can say non cellular. Now what is the thing that is specific in amoeba, plant and animal that not in virus? So the thing is that the virus is cannot we can say divide, multiplicate, or we can say survive independently. So if we talk about all these things, so their existence is independent. Specifically if we talk about unicellular organisms. Okay, now with the help of tissue culture, a single plant cell with the help of tissue culture है, it can we can say develop into complete body, and single animal cell can develop into complete body, and this can survive also independent. But in case of plant and animal, they are aggregated, but in case of unicellular organism, they are only
independent. That means there is only single cell and this is the independent. So existence of this is independent, but such type of condition is not with the virus. So that's why virus are non-cellular. तो पहली सेल की क्या कंडीशन होगी? That means if we talk about unicellular, okay, so there is independent existence है, and second is all essential functions required for survival performed by or within cell है. तो that means we can say इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ जितने भी रिक्वायर्ड है फंक्शंस है, लाइफ प्रोसेसेस है, दे आर परफॉर्म्ड बाय सेल इटसेल्फ. तो वी कैन से जो सेल है वो क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिकॉज ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सेल. लाइक वी कैन से आई एम स्पीकिंग, तो जैसे मेरी टंग हेल्प कर रही है, तो बट टंग इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ सेल्स. जैसे लेरिंग्स हेल्प कर रहा है तो अल्टीमेटली मेड अप ऑफ cells. मैं सुन रहा हूँ तो these are the different we can say component of ears made up of cell only. Okay, the fingers, these are made up of cells only. That means each and every function is performed by cell somehow. जैसे brain हमारा काम कर रहा है तो उसके पीछे कौन कर रही है? That means these are the nerve cells. Okay, now this is about the function of cell. Now come to structure. If we talk about amoeba, then structure of amoeba is like pseudopodia. If we talk about paramecium, जो paramecium की स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी पे क्या है? सीरियल लाइक स्ट्रक्चर है. If we talk about यूग्लिना, तो यूग्लिना में क्या है? That means flagella है. Now amoeba, paramecium and euglena, they all have different structure. Now अब ये यहाँ पर क्या होते हैं? इसमें pseudopodia होते हैं. तो ये किसमें हेल्प करते हैं? टू कैप्चर फूड. सीलिया है हेल्प इन मूवमेंट एंड फ्लैजेला हेल्प इन मूवमेंट. तो दैट मीन द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिसाइड बाय द सेल ओनली. तो ये क्या होगी? सेल की स्ट्रक्चरल यूनिट होगी. तो दैट मीन्स ऑफ दिस बॉडी और माई बॉडी और एनी बॉडी, तो जो सेल है वो इसको क्या देगी? स्ट्रक्चर देगी और वो इसको क्या देगी? दैट मीन्स परफॉर्म ऑल द फंक्शन. दैट्स व्हाई वी कैन से द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यू कैन सी कि व्हाई दिस इज ए लॉन्ग सेल, दैट मीन इट हैज टू ट्रांसफर मैसेज. व्हाई दिस डेंड्राइट्स आर हियर, तो डेंड्राइट मैसेज रिसीव करते हैं. व्हाई दिस लॉन्ग एक्सोन इज हियर, तो एक्सोन से मैसेज पास होता है. दैट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी सेल. तो दैट मीन the structure of each and every cell is very specific और वो उसी हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करती है. तो दैट मीन्स so now we can say cell is the structural and functional unit of life, and a unicellular independent existence is there. A single cell or we can say unicell can exist independently. उसको किसी की जरूरत नहीं है अदर सेल की. ओके, इफ वी कैन से सर्वाइवल कंडीशंस आर देयर, फूड इज देयर, एनवायरनमेंट इज देयर, वट एवर द रिक्वायरमेंट, अदर अबायोटिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वो जो है, तो दैट मीन्स दे कैन बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इज क्लियर और नॉट? नाउ नेक्स्ट इज सेल थ्योरी. सो गिवन बाय स्केलेटन स्क्वान इन 1838-39 एंड मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चोइन 1855. तो जो स्केलेटन था वो एक बॉटनिस्ट था. बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स पे काम करें, बॉटनी एंड जूलॉजी. सो बॉटनिस्ट था. ही फाउंड दैट ऑल प्लांट सेल्स आर, वी कैन से ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और जो टिश्यू है, जो टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली. ओके, एंड ही वाज ए zoologist. तो इसने क्या देखा था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells only. Okay, and he also found that cell wall is
unique in plants and also observed a thin layer outside cell, जिसको नाम now we known as it known as plasma membrane, ठीक है। बट लेकिन ये दो क्या करे, बट they didn't explain origin of सेल, कि सेल का ओरिजिन क्या था। तो फिर रुडोल्फ विर्चो आए 1855 में, उसने टर्म दी दैट इज नॉन एज ओमनीज सेलुलर ई सेलुलर। इट मीन्स all new cells arise from pre-existing cells। तो उसने ये बना दी, और नाउ दिस इज नॉन एज द मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। अगर आपसे ऐसा पूछे कि हु हैज गिवन द सेल थ्योरी, तो आप कहोगे कि स्केलेटन स्क्वान ने। अगर ऐसा पूछे हु हैज गिवन द मॉडर्न सेल थ्योरी, तो आप उसमें लिखोगे रुडोल्फ विर्चो। सो मॉडर्न सेल थ्योरी in 1855 by रुडोल्फ विर्चो। तो इसके दो पॉइंट थे। पहला, ऑल द ऑर्गेनिजम्स या लिविंग्स मेड अप ऑफ सेल्स और इस प्रोडक्ट्स, जैसे मान लिया टिश्यू है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, अल्टीमेटली दे आर मेड अप ऑफ सेल ओनली। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। और सेकंड पॉइंट था कि ऑल न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। ओके, तो ये दो पॉइंट थे जो किसमें थे, मॉडर्न सेल थ्योरी में थे। ओके, वन मोर पॉइंट, सम टाइम इन सम थ्योरीज कुछ और एडिशनल पॉइंट है, जैसे ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम a single cell that is known as zygote। ओके, तो जाइगोट सिंगल सेल है, जाइगोट से पूरी बॉडी डेवलप होती है, बट दिस जाइगोट इज नॉट इन वी कैन से सुटेबल फॉर ऑल केस, ठीक है। अगर जाइगोट बन ही नहीं रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कुछ और चीजें हैं, तो ये चीजें नहीं होगी। ओके, सो वी विल कंसीडर ओनली दीज 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और इट्स प्रोडक्ट, देन all new cell or cells arise from pre-existing cell, that is known as omnis cellular e cellular। ओके, ठीक है।